Raider position. It was Rinku who went in. So that made all that difference. But then this man, Rahul Chaudhary, is back into the thick of the actions for Aravalli Arrows. Was missing out in action and then going in for the double tie hole. Not getting it. Ankit somewhere fumbling across in the first tackle itself. Too advanced is what I felt for the Sultan of Surprises. बिल्कुल इस बार आपने सही कहा कि सबसे पहली बात तो यहाँ से राहुल चौधरी आज फिर से वापसी करते हुए नजर आए हैं और एक अच्छे संकेत कि यहाँ पर इन्हें पॉइंट जरूर मिला है, परंतु सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस की अगर हम बात करें जाते से वहाँ पर समय देना चाहते नहीं थे, सेटल होने देना चाहते नहीं थे रेडर को। थोड़ा सा बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा सा जल्दी की थी और एक बड़ा मुकाबला है। क्या लगता है नवीन आज किस तरह की कांटेदार टक्कर यहाँ पर आपको नजर आएगी? दो सर्वश्रेष्ठ बूस्टर राउंड की टीम पहले और दूसरे पायदान पर जो मौजूद है और साथ ही साथ दो बेहतरीन रेडर्स के मध्य भी ये मुकाबला होगा। I really want to see to be Periyar Panthers to be pushed to the wall because they haven't been pushed to the wall from I think consecutively 6 matches if I'm not wrong, because they've been winning those matches and winning with a lot of point difference as Jai Bhagwan comes in his first raid, ankle hold, and then as I say that Periyar Panthers needs to be pushed to the wall, they will say no way we are going to be pushed to the wall. What a strong ankle hold. बिल्कुल लाजवाब, और इस खिलाड़ी को हम कैसे भूल सकते हैं? अगर वहां पर कंसेक्यूटिव जीत की फिराक में लगातार बनी हुई है पेरियार पैंथर्स, तो नवीन का एक बहुत बड़ा रोल है और चेतन को वहां पर ये गलती जरूर हुई है। और नवीन की जितनी तारीफ की जाए, राइट कॉर्नर पर नवीन, देखिए वैसे तो नवीन नाम मुझे लगता है ना कि बहुत कमाल है और बहुत सारे यंगस्टर्स शायद अपने पुत्रों का नाम नवीन रखते हैं। Oh my God. Yeah, I got a modern name for myself. Thanks to my parents for that. But yeah, Naveen Sharma there with the top defenders tag onto his back. 53 tackle points, and why not make that 55 because this is his second tackle point for him on the day, and once again putting out the Raider in no position whatsoever. और इस बार वहां पर कौन मौजूद था? क्या सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस वापसी कर रहे हैं? इनकी टैकल सक्सेस रेट की बात करें तो अब लगभग 60% नवीन, ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसा नहीं कि कम मुकाबले खेले, काफी मुकाबले खेल चुके हैं और ये सक्सेस रेट बहुत लाजवाब है और इस खिलाड़ी की भी लाजवाब है। लोकेश गोसलिया भी एक लाजवाब खिलाड़ी है और क्या यहाँ पर किक करते हुए आशीष नरवाल को दबोचा है। इस खिलाड़ी को भी आप ज्यादा समय तक खामोश नहीं रख सकते हैं। Yeah, left corner with the kick coming in and then sending out Ashish Narwal, the big man, outside the court. And another comes the beam. Once again, Jai Bhagwan really has to do something. Because yeah, you're talking about that numbers. वो आंकड़ों के बारे में आपने बात किया था नवीन शर्मा के। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर बार जब नवीन शर्मा टैकल पे जाते हैं, how many times that Ankit has been assisting him. That is that very, very big thing that's coming in. And Jai Bhagwan has got the bonus, but not to forget, Periyar Panthers versus the Murthal Magnets had scored 20 tackle points and the raid points were just 14 or 15 probably. But then somewhere everybody was taking up a tackle point. So this is becoming a very, very strong offensive team by putting up a strong defense. Is Periyar Panthers. Absolutely. और इस बार कपिल गुर्जर शायद इस बार वहां पर मौजूद थे और देखिए जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि हमेशा किसी एक खिलाड़ी पर आप अपना दारोमदार नहीं दर्शाना चाहते हैं और रिंकू का कार्य, देखिए आशीष नरवाल ने बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु आप इस खिलाड़ी को नहीं भूल सकते हैं। रिंकू जब उन्हें रिवाइवल की आवश्यकता पड़ी है, आपको अगर सर्वाइवल राउंड की शुरुआत की याद हो तो आशीष नरवाल पॉइंट्स ला रहे थे पर उनकी टीम नहीं जीत पा रही थी, परंतु जब से वहां पर इस खिलाड़ी ने अपना कार्य करना शुरू किया है रिंकू ने, जब से आशीष नरवाल रिवाइवल हो रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे खिलाड़ी अब धीरे धीरे राहुल चौधरी एक बड़ा खिलाड़ी है और वापसी कर रहे हैं एक्शन के साथ। Yeah, big sort of comeback there by Rahul Chaudhary. Wanted to be really in the thick of actions where the Aravalli Arrows missing his services as Ankit kicks so hard that the left corner has lost balance and stepped out of the end line. Lokesh Gosalia, he was so good in sending out Ashish Narwal in the previous one, but this time the Sultan of Surprises surprising the defender even in his raiding skills. और लगातार पेरियार पैंथर्स की यहाँ पर हमने बात की, पेरियार पैंथर्स
7-4 सभी भी इस मुकाबले को लीड में है, परंतु हम बात करेंगे एक बार फिर से राहुल चौधरी की। हमने बात की, बहुत अच्छे रेडर हैं। डिफेंस यहाँ पर अक्षय कुमार वहां पर मौजूद है, और नवीन को क्या इस बार अपना शिकार बनाएंगे? क्या नवीन को इस बार अपना शिकार बनाते हुए नजर आएंगे? जरूर थोड़े से डिफेंस के सपोर्ट से नाखुश हैं और रिवाइवल होकर राम कुंवर आए हैं, जिन्होंने पिछली बार भी राम कुंवर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बेस्ट लीडर का खिताब जीता था पिछले मुकाबले में जब इन्होंने खेला था। हर बार मैंने ये मतलब नोटिस किया है कि जब अंकित नहीं रहते हैं नवीन शर्मा के साथ, तो नवीन शर्मा कुछ अलग ही डिफेंड नजर आते हैं। इतना जोश और जज्बा और जुनून में रहता है। और इस बार सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस हैज बीन पिन डाउन। दिस इज समवेयर अरावली एरोज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक विद दिस। और अच्छा लगा है देखकर कि चेतन कुमार यहाँ पर लगातार फॉर्म में अगर बने रहे तो एक अच्छी सोच है, ये एक अच्छा संकेत है। और अब राम कुंवर यहाँ से जाते हुए 5 के डिफेंस है, 1 वर्सेस 5 थोड़ा सा पॉइंट लाना मुश्किल होता है। कितना अंदर जाएंगे राम कुंवर ये भी देखना होगा। 22 नंबर जर्सी अब क्या कॉर्नर संभालते हुए नजर आएंगे वहां पर अनीश? Absolutely. Because what happens is, so when you do not have that support, and especially you're just talking about Naveen Sharma there, especially that is so important. When Ankit is not around, you cannot be dependent on the support so much. So somewhere Naveen Sharma needs to also pick that up. He can be that top raider of Yuva Kabaddi Series with 55 tackle points onto his name now. But then when the support is not on, and it's good on Ankit's part, when a left raider comes in, he goes in towards the left in, and when a right raider comes in, he goes in towards the right in position. So that makes Naveen Sharma somewhere vulnerable for left raiders, and this is Jai Bhagwan at its best, I believe, as he gets 2 points, and Akshay Kumar was somewhere deprived of some points and action, and then he has to go out with Manoj Yadav. देखिए इतना एडवांस जाने की फिर से एक बार आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जय भगवान का वहां पर कोई भी मनोबल ऐसा नजर आ नहीं रहा था। और अरावली एरोज अब इस मुकाबले में लीड पर आती हुई एक अच्छा संकेत, यहाँ से एक अच्छा मुकाबले की हमने बात की थी और ये अच्छा लग रहा है। ये जिस तरह से मुकाबला चल रहा है अच्छा लग रहा है, परंतु इस बार शिकार बनाएंगे रिंकू, शायद यहाँ पर शिकार बनाते हुए नजर आएंगे चेतन कुमार को। 8-8 बराबरी पर। Not required, isn't it, Harshit? Because Chetan Kumar could have just let that go as the Periyar Panthers were slipping in for an all-out. And what that happened is revived Ashish Narwal with that raid. Rinku has gone in and revived Ashish Narwal very, very quickly. And also, Naveen Sharma is back on the mat. So there you go, and he's been sent out. The moment when I say Naveen Sharma looks a little different defender if Ankit is not around, he needs to really correct this very soon. Look at that. A very, very hasty attempt. No intent whatsoever in pinning down the ankles of Jai Bhagwan as Ashish Narwal comes in to raid, and Aravalli Arrows lead this for the first time by 1 point. और लोकेश गोसलिया कॉर्नर के खिलाड़ी अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष नरवाल आज उस तरह के कॉन्फिडेंस में अभी तक नजर नहीं आए, रेड में भी कम आ रहे हैं, रिंकू को ज्यादा से ज्यादा रेड में भेज रहे हैं। और क्या एक अच्छे संकेत है यहाँ पर अरावली एरोज के लिए, जरूर शायद एक वापसी करना चाहेंगे। छोटी सी वार्निंग दी है, वर्बल वार्निंग दी है यहाँ पर रेफरीज ने कि चलिए एक ही खिलाड़ी बोलिए। अब 2 का हाउस है, अनीश और वहां पर रिंकू, अनीश और रिंकू। जय भगवान यहाँ पर Yeah, super tackle situation there. Ashif missed out, but he's just talking about that verbal warning. I would have said that Lokesh Gosalia is putting out a strong warning for Ashish Narwal, saying अगर आप मेरे सामने आके अपना फुटवर्क दिखाओगे या किक के लिए कोशिश करोगे तो I am here. So you will have to be very, very careful going against Lokesh Gosalia now, because he's been pinned down twice. And last man standing, Rinku, can he get something? The bonus has been given away to him. Can he get something? I'm seeing Jai Bhagwan is going very, very behind the defense line and being there, not attacking at all. And then that's the all-out for Periyar Panthers. It's been inflicted onto them by Aravalli Arrows. That's a big one for a team who's been consistently winning with big margins. This is a big blow, Harshit. Big blow, absolutely. क्या बात है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर अरावली एरोज ने जिस तेवर के साथ, वो तीखे तेवर जिस तरह से होते हैं उस तरह के तेवर के साथ आज मैट पर उतरता हुआ नजर आया है। अच्छा लगा है कि राम कुमार जा रहे हैं, जय भगवान जा रहे हैं, राहुल चौधरी, यानी कि एक बार फिर से वो जो रेडिंग का ट्रायो जो आपको देखने का मिलता था जब महिपाल हुआ करते थे और पहले भी सर्वाइवल राउंड में हराया है,
इस बात की गौर फरमाना चाहूंगा मैं, अरावली एरोज ने पेरियार पैंथर्स को वहां पर शुरू में हराया है जब वहां पर महिपाल थे। अब जरूर महिपाल नहीं है, परंतु राम कुमार और राहुल चौधरी का सपोर्ट वहां पर जय भगवान के पास है। Yeah, and that running hand touch, look at that on the right cover. Manoj Yadav first tried to, in fact, there we go. Yeah, it's Manoj Yadav who's going to go out. First it was being noticed as Anish from that right cover. Then the left cover, Manoj Yadav goes out on that attempt. As Ankit once again, this is brilliant. This is brilliant. Ankit showing why he is there as the Sultan of Surprises. Look at the way that how he swiveled across and then through his legs reached the midline. We'll have to be so careful in nabbing Ankit when he comes into raid. He's got all the skills in the book. अच्छा लगा देखकर जिस तरह से यहाँ पर, हालांकि लोकेश गोसेलिया भी बहुत ज्यादा एडवांस वहां पर टैकल करने के लिए गए थे, वेस्ट होल्ड करना चाहते थे, और इस बार यहाँ पर जय भगवान जरूर शायद स्वयं से नाखुश होंगे। थोड़ा सा ऐसा लगा कि पैर ट्विस्ट हुआ था, थोड़ा सा ऐसा लगा था कि पैर फिसला था, जिसके चलते एक बार कुछ सेकंड के लिए ये देखे पॉज सा आ गया था और नवीन शर्मा, अंकित, अनीश सबने देखा और सब टूट कर पड़ेंगे और पॉइंट मिलेगा इस बार पेरियार पैंथर्स को। क्या यहाँ से वापसी की कहानी लिख रहे हैं? Yeah, actually, when you know when Ashish Narwal has not been raiding in, Ankit is there to support the team, and he can twist and turn any situation towards the Periyar Panthers. He is a danger man for Aravalli Arrows, as once again Rahul Chaudhary makes his way in. This has to be said, where it is very important for the Aravalli Arrows to keep up that lead. Yeah, this is nice, because if you let the Periyar Panthers come back into this match, they will not give you a sniff of a chance to even make sure to make that your game. Once again, Manoj Yadav looked weak today, Harshit, in that cover position. बिल्कुल इसी के बारे में चर्चा मैं करना चाहता था। मनोज यादव लगातार वहां पर, और इस बार कपिल गुर्जर और गोविंद गुर्जर, इन गुर्जर भाइयों से आप ज्यादा समय तक ध्यान दूर नहीं कर सकते हैं। नवीन, इन पर ध्यान देना पड़ता है। जो गुर्जर भाईचारे की आप बात करते हैं, गुर्जर भाइयों की जोड़ी की आप बात करते हैं, ये और भी ज्यादा विश्वसनीय होते जा रही है। जैसे जैसे ये मुकाबले आगे चल रहे हैं, इन दोनों की जोड़ी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेकर आ रही है। अब राम कुमार जानते हैं 6 पॉइंट की लीड है, 5 का हाउस है। क्या अंदर जाएंगे, क्या प्रयास करेंगे, लग नहीं रहा है, फिर भी देखना होगा कितना अंदर जाना चाहेंगे। Just playing on that back line, so I will not suggest Ramkur to go inside and go in very deep. Yeah, good decision coming back. But then it's a full house, and Ankit has got everything to do for. He can run in and confuse the defenders, go in for the bonus, and then easily get a point. There you go, bonus +1, and another big error coming in from Kapil Gurjar. This time the captain could not keep Ankit down on the lobby. Yeah, 2 points awarded. So substitution coming in from Aravalli Arrows. In fact, Periyar Panthers there very quickly. Has to be said that there is some discussion, there is some importance. But Jai Bhagwan, has to be said about him. Some details coming in from what he was earlier. He started off as a Coco player. Right, that's interesting. That's very interesting. Started off as a Coco player, played for the Hill State, and then found immediate interest in Kabaddi and joined that JSG Academy to make sure he trained in for Kabaddi, and then became a very regular player for all the state teams and national teams that he's played. And also, as I have seen him from Khel India University games, he is phenomenal. और देखिए उसमें भी चपलता चाहिए होती है, और चपलता इस खिलाड़ी में भी है। परंतु एक बार फिर से इस बार ये गुर्जर भाई की जोड़ी, और कपिल गुर्जर को मैंने अक्सर देखा है जब कोई इनका शिकार करता है तब ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। देखिए एक बार फिर से गोविंद गुर्जर और कपिल गुर्जर की जोड़ी जानती है कब किसे ब्लॉक चेन में करना है। वो यहाँ से क्या एक बड़ी क्रम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्या इंजर्ड हुए हैं। Yeah, there is some hit on the lip, I think, of the defender. It shouldn't have been said. Lokesh Gosalia somewhere was involved in that tackle, and I guess the lip is being cut, or there's a big bruise on the lip. Let's see what happened. That was all fine. Oh, there you go. After the tackle was successful, Lokesh Gosalia came in straight for the support, and then
had that hand of Ankit hit his lip. So not to worry so much, as we have our physio partners UEM, University of Engineering and Management Jaipur, and also our hospital partners Metromas, which is very nice in association with Dr. Abhishek Gupta. And Akshay Kumar says, no way you've got your foot on me, Ram Kumar. Everybody is swearing on the mat, and Lokesh goes, in fact Akshay Kumar is asking him to go into the lobby. Akshay Kumar is asking him to go into the lobby, and Ram Kumar does not do it. There you go, the referee agrees with Ram Kumar. Oh, that was nice to see. ठीक है, बिल्कुल स्विफ्ट टो टच वहां पर किया था, एक अच्छा टो टच, और राम कुमार की तारीफ करने हुए जिस तरह से वो भी एक सपोर्टिव रेडर, शायद क्या एक वार्निंग के लिए कार्ड निकाल रहे थे, परंतु शायद वहां पर तुरंत जैसे देखा निकल लिए थे वहां पर कि चलिए थोड़ी सी पतली गली में ढूंढ लेता हूँ. Yeah, has to be said. But then it should not be getting in too much of verbal conversations. Yes, we agree, we understand that it's a contact sport, it's a game which has the high josh, Jazba and Junoon, but has to be said, somewhere you will have to maintain your cool, you will have to maintain your calm. I understand, Harshit, Jaipur is too hot, but the hotness can be only on the Kabaddi guidelines and Kabaddi rules, isn't it? अब देखिए, मैं ये बड़ा आपकी बात का भी उत्तर मिलेगा, पर उससे पहले मैं बड़े संकोच में था कि आशीष नरवाल जैसा रेडर, बहुत कम रेड मुझे जहां तक याद है, ये या तो इनकी महज 15.5 मिनट में, क्या इनकी सिर्फ तीसरी रेड है नवीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दूसरी या तीसरी रेड इनकी है. ज्यादा रेड जिन्होंने की नहीं है, ये जरूर मेरे लिए संकोच विषय था कि क्यों आशीष नरवाल जैसा खिलाड़ी, जब आप इतने बड़े दर्जे खिलाड़ी हैं, आपको अपनी स्किल्स पर इतना विश्वास है, तो क्यों यहाँ पर आपने 15.5 मिनट 16 मिनट तक के खेल में बहुत कम रेड्स किए. नवीन, क्या इसके पीछे आपको वजह नजर आई? Yeah, there's no reason whatsoever. See, that's what I've been telling from yesterday. In fact, in this booster round especially, these lads need to understand, they always depend on good starts. And then they think if they do not have a good start, then it's not going to be their day or something like that. Then that is the thinking, and that's the mentality that we will have to get away with. And then in the morning also, when we were speaking about Ashu Malik, me and you, Arshit, we were just saying that if the start is not good, don't bother. Look at that. Lokesh Gosalia once again tried in, but this time Ashish Narwal has got 2 points. 7-7-9 right, somewhere. Now the beginning of the points are trying to come in very thick and fast. That was the first error from Aravalli versus left corner. बिल्कुल, और इस बार गोविंद गुर्जर वहां पर लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे. लोकेश गोसलिया शायद वहां पर इंजर्ड हुए हैं, जिसके बाद वो राइट कवर की पोजीशन में खेल रहे थे, जहां कपिल गुर्जर खेलते हैं. उसकी जगह वहां पर लोकेश गोसलिया ने ली, और साथ ही साथ गोविंद गुर्जर वहां पर कॉर्नर खेलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते आशीष नरवाल ने उन्हें शिकार बनाया. 2 पॉइंट मिले हैं, और वो ऐसे खतरनाक रेडर्स में से एक है कि कभी भी जो लीड है, अभी तो महज 4 पॉइंट की लीड बची, और आशीष नरवाल, आप देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये खिलाड़ी अपने बाकी सभी खिलाड़ियों की भी अगर हम बात करें तो गुड स्टार्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, परंतु इन खिलाड़ी में वो माददा है, वो काबिलियत है कि अगर गुड स्टार्ट ना भी मिले तो आप कभी भी मुकाबले में वापसी कर सकते हैं. संकोच न कीजिए आप अपनी काबिलियत पर. Yeah, that is what the thinking has to be. And then see what happens when you do not have the regular left corner. Then once again the struggle is on, and Ashish Narwal jumps in and says, okay, I've got that. So now with that point, he actually becomes the top raider of Yuva Kabaddi Series, no doubt about it, as he goes in and targeted Ram Kumar. I really do not understand why was Ram Kumar left so alone to be a prey for Ashish Narwal. These are the small things where Aravalli seems to really think about it, as Yuva Kabaddi comes in for a low eye race. It's a full house. He can do everything that he wants, but he finishes in that attempt. Is there 2 points? Right, yeah, that is what it is. It is 1 each. Because Jai Bhagwan, when the dash had happened, the defender also came out with him. Yeah. और देखिए उसके बाद कितनी चालाकी से वहां पर उन्होंने रेफरी को दिखाया कि मेरा पैर अंदर है. ये देखकर बहुत अच्छा लगता है. हालांकि जरूर वहां पर रेफरीज ने कहा कि चलिए, जैसे सीसीटीवी की आंखें होती है, कैमरेज होती हैं, उसी प्रकार से मेरी आंखें हैं, आप बच नहीं सकते हैं. और बॉडी मजा आया. और आशीष नरवाल ने भी यहाँ पर कहा कि चलिए अब मेरे पास मौका है, आप एक बार हमें ऑल आउट कर चुके हैं, अब हम भी प्रयास करेंगे कि एक बार आपको ऑल आउट की तरफ धकेल पाएं. See, this is what is nice. Even if your start is not good, you can come back in the 40 minutes of the game itself.
You shouldn't be waiting for the next game or the next day. It's that day, that game that you'll have to come back. As Rahul Chaudhary has been given the bonus away from Navin Sharma, no problem whatsoever. But I wonder if Ankit will go in for the surprise. No, he won't. No, he won't. And the substitution will also be ready to come in for the Aravalli Arrows. Yeah, there you go, there you go. Because they want a proper defender. They really want a proper defender coming out in the super tackle situation as Mahendra comes in for Aravalli Arrows in place of Rahul Chaudhary. And it's a first half done. But Aravalli Arrows lead this by very slender leadership. It's not a big one, but somewhere Ashish Narwal is coming back, and he's back with a lot of points, and he has become the top raider of Yuva Kabaddi Series, overtaking Partik Dhaya. This is the game of the जोश, जज्बा, जुनून। और सीधे चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ। ये थी जिस तरह से यहाँ पर एंट्रेंस करते हुए हमारी दोनों टीम्स नजर आई और जिस तरह का खेल रहा है यहाँ पर। आज बहुत ही मजेदार हमने बात की थी कि आज का ये दिन बहुत ही अतुलित होगा। दोनों टीम्स आशीष नरवाल और कपिल गुर्जर दोनों ही टीमें कप्तान, बहुत अनुभवी कप्तान है। कपिल गुर्जर के बारे में हमने बात की, आशीष नरवाल के बारे में हमने बात की। अच्छी शुरुआत रही अरावली एरोज के लिए और पहले भी जब एक बार भिड़े थे तो अरावली एरोज ने मुकाबले को जीता था। रिंकू ने जरूर शुरुआत में जाकर पॉइंट लाए थे। Yeah, when the points started to come in, it was the initial phase where the Aravalli Arrows had their nose in the front. Then Rinku somewhere silently getting those points, and then Ankit also was snapped down once or twice. But then after that, somewhere Ashish Narwal has tried to find his feet back, especially after that injury to Lokesh Gosalia. Yeah, it's not a big injury though, it's that cut on the lip, but this raid from Ankit, after that everything started to go towards the Periyar Panthers as Jai Bhagwan is once again known to come back in the second half. He will be making sure he will fire in very, very quickly. But somewhere, Lokesh Gosalia not being on the mat is really hurting. But the Aravalli Arrows will have to find out an answer very quickly. And then Ashish Narwal has started his regular form of getting his points. Look at that. Look at that. He's not being faced by the strong defense of the Aravalli Arrows. और हाफ टाइम तक के समय की अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 22-19 से जरूर यहाँ पर अरावली एरोज के पास महज 3 पॉइंट की लीड है, जो कभी भी यहाँ पर कम करते हुए नजर आ सकते हैं। पेरियार पैंथर्स 13-13 रेट पॉइंट्स बराबर है। टैकल पॉइंट एक जरूर अतिरिक्त प्राप्त किया अरावली एरोज ने और ऑल आउट पॉइंट्स का वो महज फर्क बचा है। पेरियार पैंथर्स के पास एक बहुत अच्छा मौका है, ऑल आउट की तरफ धकेल दिया जरूर है। अभी तक अरावली एरोज को 2 मैन कोर्ट पर वहां पर आपको जरूर मौजूद मिलेंगे। महेंद्र उनमें से एक सब्स्टिट्यूट डिफेंडर हैं। 2 अच्छे डिफेंडर क्या कार्य कर पाएंगे ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत ही सेकंड्स कम के बाद हम मिल रहे हैं आपके साथ पुनः एक बार फैन कोर्ट पर। Yeah, welcome back everybody on fan code and the re-substitution that happened. Mahendra came in thinking that there is a little more time for the super tackle situation and Shankar Yadav substituting him very rightly. But then when the second half has to begin, Rahul Chaudhary has been re-substituted back for the raid as Aravalli Arrows had won the toss and selected the court. So they get the first-hand opportunity to raid in the second half's first raid. The bonus is being given away by Navin Sharma on that right corner, because they know when they go back, it is just 2 men on court. And nice to see where the substitution will again be taking effect. So Mahendra once again comes in and Rahul Chaudhary goes out. So it's a super tackle situation where Ashish Narwal will be trying to clean this up. I will really feel that Ashish Narwal will be tackled here, Harshit. What do you feel? Quickly. देखिए मुझे लगता है कुछ पॉइंट लेकर जाएंगे आशीष नरवाल। यहाँ से कपिल गुर्जर जरूर मौजूद है, महेंद्र भी वहां पर सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं और इस बार नवीन आपने कहा है तो शायद वहां से आशीष नरवाल को जाने नहीं दिया जाएगा। क्या बात है, ये वो टैकल है जिसकी आप बात कर रहे थे, अद्भुत अलौकिक। ये देखकर सच में विश्वसनीयता बढ़ जाती है कबड्डी के खेल में।
देखिए जिस तरह से यहाँ पर Absolutely, waist hold किया। absolutely. It's all power. It is all power from Kapil Gurjar. And why I was so confident, because I was really confident because Mahendra from the bench, when some defender, especially not a raider, देखिए when नवीन आपको some रोकना defender चाहूंगा। comes in from the bench, देखिए नवीन Yeah, आपने when some आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, ये आप में ताकत है, जो भगवान की दी हुई ताकत है, जिसमें आप अक्सर सत्य कह जाते हैं। No, it's not that. It's just guessing and gauging the game well, because being so closely associated with this game from the beginning of the franchises as well, even before the beginning of the franchises, been associated with this game. So what actually happens is, Harshit, whenever there is a defender who comes in, okay, from a substitution, he always shines because he's got that extra energy there. He's got that extra energy as Ankit once again runs in and goes out with a very quick raid. Now, do what I raid as we keep speaking. Go with Gurjar as we लीजिए आप, सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस, he is roaring now। क्या बात है सुल्तान, ये अद्भुत खिलाड़ी है, जितना कहा जाए उतना कम है। And a do what I raid now for himself. Kapil Gurjar, has he got it? Yes, I guess the tackle is being successful. Ankit tries his real hard back, but then right around. It was a strong struggle. Once again, the same combination where Ashish Narwal was put out. Kapil Gurjar and Mahendra. Look at the way they have put it out once again on top of the Periyar Panthers. Second time this is happening. Mahendra and Kapil Gurjar's combination with a second successful super tackle. Marvelously done. So this is so important. This is what I was trying to say. When a defender comes out from the bench, he's got that extra energy. He's got that extra bit of time. And the Raiders got to do all the running, all the talking. So there is a lot of energy being lost. There is a lot of steam being lost from the Raider, but not to the defender. That has happened twice, Harshit. Twice. And two big Raiders, Ankit and Ashish Narwal, being sent out on that super tackle attempt. देखिए अब नवीन गए हैं, ये जरूर नवीन गए, आशीष और रिंकू वहाँ पर दोनों मौजूद थे, उसके बावजूद यहाँ पर नवीन जाते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर एक बार फिर से लोकेश गुजलिया वापसी कर रहे हैं कॉर्नर में। देखना अंदर जाने का प्रयास ना करें या करेंगे, नवीन कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, हम अभी भी कार्य कर सकते हैं। जो कार्य प्रॉपर रेडर नहीं करेगा, मैं बतौर खिलाड़ी टीम के लिए कर दिखाऊंगा। चाहे मैं मेन डिफेंडर हूं, बट मेरे पास वो काबिलियत है, मैं डिफेंडर की तरह सोचूंगा। जो डिफेंडर इस समय पर सोचता है नवीन, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि डिफेंडर की तरह सोचता है। यस नवीन, आप बताएं। Yeah. So I was just trying to say, when Naveen Sharma went in, it is just the time to breathe for Ashish Narwal and Rinku. That is all he wanted to do, and he went in for the raid. But then on the other side, what Mahendra thought was, it is just a defender, so I can go in and I can actually tackle. That is what happened. Ankit came in very quickly with a super tackle now with another defender and Kapil Gurjar along. So this is very important. Lokesh Kosalia is there. Will Ankit try to do something else? Oh. Right. Lot of things happening. My God, it was so quick. Kapil Gurjar actually wanted a timeout. He wanted to just have a breather. And then Ankit went in and somewhere. Did he step into the lobby? 2 + 2 4 points. I guess the lobby. 2 + 2 4 out. points. Can you believe this? Sultan of Surprises has once again made sure Periyar Panthers are back into this and with a lot of effect. What just happened? Nobody stepped out of the end line. 8 out, 14 in. देखिए शायद वहां पर कपिल गुर्जर जब राइट कॉर्नर की तरफ गए थे, वहां पे शायद वो कहीं क्या लॉबी को क्रॉस करके, तो शायद इसी वजह से वहां से रेफरी, और देखिए शायद क्या ये भी वजह थी वहां पर कि अंकित गए नहीं थे, उससे पहले टाइम आउट की यहाँ पर कॉल कर दी थी। और अंकित ने देखिए कितनी चालाकी से, क्यों उन्हें इतना मार्वेलस रेडर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस चालाकी के साथ, वो इस बार अनीश ने यहाँ पर गलती की, राहुल चौधरी को जरूर पॉइंट मिला है। देखिए कितनी चालाकी के साथ उन्होंने देखा कि अगर राहुल चौधरी वापस आएंगे तो हम ऑल आउट के लिए थोड़ा आगे धकेल जाएंगे, परंतु जिस तरह से अंकित वापस गए और वहां पर जाकर पॉइंट लाने का प्रयास किया, वो सच में एक चालाकी और क्लेवरता का प्रदर्शन था। Mark that raid, Harshit. Mark that raid. Ankit's raid, where the
two proper defenders were Lokesh Gosalia and Kapil Gurjar. Both of them were cleaned up. If somewhere Periyar Panthers will win this match, that will become the turning point of this match. And Ankit wants a substitution. Yeah, definitely. Periyar Panthers sending out Raman and then bringing back Manoj Yadav. Raman was there but did not contribute much in whatever the team's cause is. So once again, Manoj Yadav, the left cover, has come in. And Ankit suddenly playing cover. Right, can he just leave a position to someone else? No, he says, I'll play in all the positions that a Kabaddi man has. He's playing in right cover this time. And the left cover commits the error. Left cover commits the error. And look at Ankit's stare towards Manoj Yadav. Bonus +1 for Rahul Chaudhary. देखिए मनोज को अभी सब्स्टिट्यूट कराया गया था वहां पर, और इस तरह की गलतियां आप नहीं दोहराना चाहते हैं। आज मनोज यादव को हमने लगातार गलतियां करते हुए देखी है और लगातार वो गलतियां यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी एक छोटी सी चूक वहां पर हुई है और आशीष नरवाल जैसा खिलाड़ी एक बार फिर से जा रहा है। 13.5 मिनट का लगभग समय शेष है। 25-30 अभी भी 5 पॉइंट की लीड है। कपिल गुर्जर, परंतु आशीष नरवाल कहेंगे इतना आसान नहीं होगा। बॉक्स लाइन से बहुत पहले से आपने मुझे डिफेंस करने का प्रयास किया था। युवा कबड्डी सीरीज का मैं सर्वश्रेष्ठ रेडर हूं। Yeah, if I'm not wrong, let me just take this opportunity for a fun factor. I just felt that Kapil Gurjar wanted a breather there, Harshit. He just wanted some breather to go back and rest and come back very fresh. And that advanced tackle was put in. But Jai Bhagwan, as we know, that he is very, very clear in bringing his captain back immediately onto the back. Look at that. That is what Jai Bhagwan is made of in the second half especially, and that's the third point in the second half consecutively coming in. And Kapil Gurjar does not get time to sit on the bench for a long time. और देखिए जय भगवान अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर वापसी कर रहे हैं बहुत समय बाद, हालांकि क्योंकि जब उनकी टीम ऑल आउट होने जा रही थी बहुत समय बाद उन्हें इस हाफ में रेड करने का मौका मिला और सुपर 10 के भी बहुत ही करीब है। अब आशीष नरवाल प्रयास कर रहे हैं कि चलिए अंदर जाया जाए। 7 से 6 सेकेंड और इस बार कपिल गुर्जर वो जानते थे कि समय अब कम बचा है और प्रेशर आशीष नरवाल पर है। ये बहुत अच्छे दिमागी तौर पर खिलाड़ी है कपिल गुर्जर, और कपिल गुर्जर की खास बात है अगर कोई रेडर उन्हें आउट करता है तो उस मुकाबले में लगातार उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। कई बार सक्सेस होता है और अक्सर वो सक्सेस भी मिलती हुई नजर आती है अरावली एरोज और उनके कप्तान को। Yeah, Rahul Chaudhary, can he go in and just cool down the nerves, cool down the pace of the game, because it is going really at humongous guns, and there you go. Akshay Kumar says enough is enough. Let me say Periyar Panthers can make a comeback from here, and Rahul Chaudhary has been pinned down. And look at that just fine junoon that he showed after the ankle load, just throwing away Rahul Chaudhary's left ankle. यस, शायद हमें भी एक इशारा दिखाना चाहते थे कि चलिए थोड़ा सा खिलाड़ी कुमार के बारे में भी बात कीजिए, परंतु गोविंद गुर्जर आज उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आए बतौर खिलाड़ी। जिस तरह से आज आप उनसे उम्मीद करते हैं लगातार वो भी गलतियां करते हुए नजर आए। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन था और रिंकू एक बार फिर से रेड पर आए, रेड की कमान संभाली और यहाँ पर महज 4 पॉइंट। और देखिए कहाँ पर ये मुकाबला रुका है नवीन, 11 मिनट 11 सेकेंड शेष है इस मुकाबले में। 28-32 का स्कोर है अरावली एरोज के पास, 4 पॉइंट लीड। और कहते हैं ना कि कबड्डी हो या फिर भारतीय संस्कृति हो, 11 नंबर का आंकड़ा शुभ होता है। अब किसके लिए 11 नंबर का आंकड़ा शुभ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। Yeah, very nice point in time where the clock has been stopped. It's a very auspicious time for everybody. What a way to stop it. But who will be getting that auspicious time towards themselves is a big question. Let me just tell you something. In the previous match when Taroba Tigers were playing, we had Akash Deshwal, who's a very surprise package brought in by the Taroba Tigers coach Anil Kumar. Why am I saying that is because he clearly showed the proper way what a cover defender should do. Go in and just dash the raider out. Just dash him away. And he was dashing Pratik Daya. And it's not easy. It's not easy against a raider like Pratik Daya to make sure the dashes come in so consecutively. And not once but twice the successful tackles against Pratik Daya by Akash Deshwal was successful. Why am I saying this? Is because today जब गोविंद गुर्जर फॉर्म में नहीं है
तो वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब डैश के लिए पूरी तरह से नहीं जा रहे हैं। Oh, there we go. 5 number is the call that is coming in. And Ankit, even without touching the defender, he gets a point. My God, he just confuses the defense so much. Mahendra, the substitute, was so well in that super tackle. Has to go out, stepping out of the end line. और इसीलिए तो उन्हें कहा गया Number 5 also gets a warning. बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कपिल गुर्जर को भी देखा था, लगातार वहां पर रेफरीज कह रहे थे, पिछले जब सुपर टैकल की हमने बात की थी, वहां पर जो अंकित की रेट थी, लगातार कह रहे थे कि नंबर 1 यू आर आउट, आप वापस आ जाए। फिर भी कपिल गुर्जर वहां पर मैट पर थे। और अभी नंबर 5 जर्सी को भी बार बार बोला गया था, और शायद इसी वजह से ग्रीन कार्ड दिखाया गया है कि प्लीज आप हमारी एक बार में बात सुनिए। परंतु जय भगवान कहा किसी की सुनने वाले हैं, वो सुनेंगे तो सिर्फ खुद की। और 2 more point for जय भगवान अक्षय कुमार, और अंकित को क्या अपना शिकार बनाया है। Once again, green card. Whoa, this match is getting really hot and excited here because Aravalli Arrows are not letting the Periyar Panthers rule on them. And what happened in that change? I just couldn't believe myself because Ankit and both Akshay Kumar were found to be wanting in that dubki which came in from Jai Bhagwan. And another weak tackle from Lokesh Gosalia, this time from left corner. Gets a point for Periyar Panthers as Rinku. But just going back to the Jai Bhagwan's raid, under the chain of Ankit and Akshay Kumar, right, that is something else. But now Akshay Kumar has been revived, but Ankit has to come back on the match yet. And that will be happening with that block. Wrong one from Anish this time. और अनीश और मनोज यादव शायद वहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या लाजवाब चेन टैकल नजर आएगा, ये देखकर अच्छा लगता हुआ। इस बार जय भगवान को यहाँ पर दर्द दबोचा है कि बड़ा संकेत है और ये अच्छा प्रदर्शन है, ये देखकर अच्छा लगा है। और ये भी देखकर अच्छा लगेगा हमारे युवा खिलाड़ियों को कि वापसी कर रहे हैं हमारे अंकित। I'm really liking the way these two teams are playing. They are not letting go any team to be on top of each other. Govind Gujjar once again going in for that diving double ankle hold. Does not get Ankit, does not get both his legs, just gets his right leg, and then that's enough for Ankit to go back towards the midline. Now, full house, Periyar Panthers, just a 2-point lead for Aravalli Arrows, and Rahul Chaudhary has to be really mindful and very smart and watchful in what he does in this raid, because this can be the final hit in that coffin, because this is really important. I was just telling him to be very smart, but he showed his back. और अब देखना होगा कौन जाएगा रेड के लिए, ये दिलचस्प होगा। अच्छा लगा देखकर आशीष नरवाल आ रहे हैं, पर आशीष नरवाल जब पिछली बार आए थे कपिल गुर्जर ने उन्हें शिकार बनाया था, और राम कुमार इस बार उनको साथ देने के लिए वहां पर मौजूद हैं। देखना होगा किस अंदाज में कपिल गुर्जर, आशीष नरवाल और राम कुमार यहाँ पर 1 versus 2, ये अच्छे संकेत क्या किस रेडर के लिए, क्या किस डिफेंडर के लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है। ये समय महत्वपूर्ण है, 7 सेकेंड 6 सेकेंड ये सही है, वापस आ गए। I really loved what Ram Kumar did. I am very impressed with the way he saved himself as a raider in the squad, and with a super tackle situation with captain around there. He very stayed away from Ashish Narwal's slaps. But he has to make something here. As a raider, he has to go and at least go in for the bonus. Will Anish come across? No, he won't. And he was also very off for Ankit coming towards him. But now Ankit will come in front of him for the raid. Super tackle situation on. Ankit will definitely try and wipe this away. He's got Kapil Gujjar there. This is what he is known for. Scores equal, Harshit. Scores are equal. इक्वलाइजर पेरियार पैंथर्स वापसी कर चुके हैं, शंखनाद हो चुका है कि पेरियार के पैंथर्स भैया कबड्डी के मैट पर उतर भी चुके हैं और अपना फॉर्म प्राप्त कर भी चुके हैं। स्कोर बराबरी पर है। अब अरावली एरोज की जो चट्टाने हैं वो बहुत स्ट्रांग है और उसी प्रकार से स्ट्रांग प्रदर्शन करना होगा, परंतु राम कुमार कह रहे हैं कि रुक जाइए, अभी खेल में बहुत कुछ बचा है। अगर लीजिए आप 2 पॉइंट से बढ़त, राम कुमार बोनस प्लस सिंगल, एक और पॉइंट यानी कि रिवाइवल। I
I would have given him 3 points if I would have been the referee, because it was actually Ankit who's been taken off the mat. So bonus plus Ankit is actually 3 points for a Raider. And in that time where he's also saved his team from a big all-out. And that once again will be the turning point, Harshit. Make a note of that as well. Because if somewhere Aravalli Arrows would have been all out in this situation, it would have been curtains for them. They couldn't have come back. But Ashish Narwal is got once again to deal with one defender and one Raider. Ram Kuwar keeping himself away, but not this time. Cleans him up. Ashish Narwal says, okay, all out, you go, Aravalli Arrows out of the match. Let us lead this game even more comfortably and even more correctly as we always do. और आशीष नरवाल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। और पेरियार पैंथर्स यहाँ पर अब सेकेंड हाफ में काफी मशक्कत के बाद लीड में आई है, परंतु जय भगवान, देखिए जय भगवान, और डुबकी लगाने का प्रयास था अक्षय कुमार और अंकित की ये जोड़ी। अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार और अंकित सुल्तान ऑफ सरप्राइजेज चेन में गए। अनीश ने अच्छा प्रदर्शन, अच्छा वहां पर सपोर्ट, सभी खिलाड़ी का नवीन की तारीफ करनी होगी। और अब रिंकू 3 पॉइंट की लीड है पेरियार पैंथर्स के पास। 4.25 मिनट का समय शेष है। क्या ब्लॉकबस्टर ऑफ कबड्डी हमें देखने को मिल रहा है, कबड्डी एट इट्स बेस्ट। Very best. Kabaddi at its very best. Booster round, top 2 teams from the points table, and they are hungry for each other. The Panthers are going on top of the Aravalli mountains like anything, and the Arrows sometimes go back on the Panthers and pierce them. And what a game, what a game. There is no breathing space, and thanks for the referees and the coaches now for that timeout. Very important to actually slow down this game and think from between the ears. That has not been done. Periyar Panthers are known to do this. They are known to actually speed up the game in such a fashion that the Aravalli Arrows or even any opposition does not get even a single chance or a single extra minute to think about a good strategy against them. Look at that. Look at that. Observe that, Harshit. When Mohit Uda is talking to the team, it is just everybody knows what they have to do. It's not that group cohesive talk. They know what they are doing. They are speeding up the game. Whether it's in defense, whether it's in raid, especially in the raiding department, they are speeding it up. They are not letting Aravalli Arrows think of a strategy for themselves. Look at Naveen Kumar. Oh, Naveen Sharma coming back, and no. Rahul Chaudhary says, I've got you. No, the referee does not agree with him. Oh, they're still talking. नवीन शर्मा जी, आप युवा कबड्डी सीरीज के टॉप डिफेंडर हैं, बात करने के लिए हर्षित बैठे हैं, हम कर लेंगे। और चलिए 12 नंबर जर्सी आशीष नरवाल गए। टॉप डिफेंडर, टॉप रेडर्स की अगर हम बात करें तो पेरियार पैंथर्स स्पीड अप करने के लिए जाने जाता है, और स्पीड अप करने के लिए जाने जाते हैं ये आशीष नरवाल। परंतु शायद पॉइंट नहीं मिला है। पर देखिए किस तरह से ये सरप्राइजेस देने वाली टीम है। चाहे हम अंकित की बात कर लें, चाहे हम आशीष नरवाल की बात कर लें, या फिर हम पूरी पेरियार पैंथर्स की बात कर लें, ये टीम सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। और देखिए इन्हें जब पीछे होते हैं इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने बेसिक पर स्टिक करते हैं। ये जानते हैं किस तरह से मोमेंटम को बनाना है। और राहुल चौधरी इस बार कहेंगे कि इस बार क्या है पॉइंट। Yes. In the previous occasion, he was not agreeing, and there Naveen Sharma this time being a culprit of going in too much, too early. What I read, Ashish Sharma did not know about that. I am very sure he did not count it. Unless and until he heard that hooter go, he did not realize that it's going to be a do or die race. He just wanted to stand there and spend some time on the walk line, and then he does not even get the bonus, I guess. He's cutting that line under 10 seconds. The defense has to be really back. Oh, he's got the bonus, and I was happy to see Ankit celebrating even more than Ashish Narwal. Just see how operated that bonus. Unbelievable team effort and team coordination by the Periyar Panthers. Ankit was celebrating there, Harshit, more than Ashish Narwal. देखिए यही वो टीम गेम है ना। और मैं पिछली बार जब वहाँ पर आसानी से वहाँ पर देखिए दिखा था, वहाँ पर लोकेश गुजरिया ने वहाँ पर आसानी से बोनस देने का मौका दिया था आशीष नरवाल को। और आशीष नरवाल जैसा खिलाड़ी जानता है बोनस कैसे प्राप्त किया जाता है।
और खुद पर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था। उसके बाद भी एक टच पॉइंट लाने का प्रयास किया, पर जब नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि चलिए मुझे पता है, मुझे बोनस मिल चुका है। और अंकित ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, ये दर्शाता है कि एक टीम की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुल्तान सरप्राइजेस ही नहीं देते हैं, ये अपनी टीम में एक जज्बा लेकर आते हैं, एक जोश लेकर आते हैं और जुनून का संचार करते हैं। Yeah, once again, Jai Bhagwan making sure. 1 point around the road. Oh, he's got a bonus +1. What a time. Oh, no, is it? It's just 1 point. Oh, no bonus. No bonus. And once again, Manoj Yadav being the culprit there. And this time, Ashish Narwal can actually run the clock down somewhere. But will he do that? It's not a big lead. Will he be comfortable in doing that? It's just 1 point. But I'm sure he will go in for the attack there, Harshit. देखिए बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि तो लगभग अगर हम बात करें तो 1.5 मिनट का समय था जब वो रेड के लिए आए थे। और क्या यहाँ पर स्विफ्ट टू टच करने का प्रयास किया, शायद एक बोनस का भी प्रयास करना चाहते थे लोकेश गोसेले के पास। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, परंतु कपिल गुर्जर और क्या किया है नवीन, क्या ये मिड लाइन टच किया है? ओह नो, No, Raider out. Raider out is the decision coming in. That's a big decision. Where is Ashish Narwal's hand? No, Harshit. It did not even touch the midline. It was so close. I really was stunned to see if Ashish Narwal could have just crossed it by a whisker. The scores are level. Rahul Chaudhary does not want to go in and get pinned down. He will stand there and make sure the clock is running down. Why is he doing that? Because if he can go in and get some touch points, it is only him that will be out. If a Raider comes into your court, the Raider can get more than 1 point. We'll have to be very serious this time. But will Rinku go for the points, or will he be settling in for the draw match? And Kapil Gurjar is not in the defense. He is actually going in towards the midline to go in for a pursuit. And then now he comes in. He realizes that Rinku is going in for the point. He's trying the bonus. Very important. What last moments of this game here, Harshit. Oh, gets back. So wrong. So wrong. Tell me what the coach is saying here, Harshit. It was so wrong by Rahul Chaudhary for keeping arguments. Yes, I'm sorry, referee, from the players' side, and the coach also is livid in what has happened. Yeah, I completely understand the emotions. When Rinku can do it, why not? Why not Rahul Chaudhary? He should have gone in. Oh, that is such a big error, Harshit. What's happening? देखिए ये वो जिगरे का खेल है, ये कुछ ताबड़तोड़ प्रदर्शन है, ये है कबड्डी का खेल। रिंकू, इस युवा खिलाड़ी के बारे में शायद जितना कहा जाए रिंकू, क्योंकि स्कोर बराबरी पर था, चाहते तो आसानी से बॉक्स लाइन पार करते, रेड को लीगल करते, टाई से संतुष्ट हो सकते थे। एक बार जरूर शायद ध्यान मन में आया होगा, अगर विपक्षी टीम ने मुझे डिफेंस कर लिया तो मैं मेरी टीम के लिए हार जाऊंगा, विलन बन जाऊंगा, परंतु उन्होंने उस बात को छोड़ा, अपनी स्किल्स पर दर्शाया। और इनसे बड़ा सितारा आज निश्चित तौर पर, चाहे आशीष नरवाल अच्छा खेले हो, चाहे अंकित अच्छा खेले हो, पर मेरे लिए आज रिंकू से बड़ा सितारा आज मुझे पूरे दिन में कोई नजर नहीं आया। क्या जिगरा है, क्या दिल है, क्या काबिलियत पर विश्वास है, और क्या बेखौफ खिलाड़ी है। फियरलेस, एक्सीलेंट, ट्रेमेंडियस मार्क फ्रॉम रिंकू। जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम होगी। Absolutely, we're just running out of those superlative terms and degrees. But this tackle was one which was really important for keeping down Ashish Narwal. Aravalli had it in them until the last minute, until where the scores were 40 each. Ankit also today struggled somewhere here and there, but he was also being pinned down in the super tackle. So it was all Kapil Gurjar and Mahendra putting in a very Herculean effort to get those super tackles going. But somewhere what happened to Rahul Chaudhary? When you do not decide to go in for the kill, you get killed. That is what it is. And this one by Ankit, going in and touching and making sure everybody was cleaned up. The super tackles changed the match towards the Periyar Panthers. So make sure, Rashid, these are the lines that can be staying in with the Kabaddi game forever and ever. If you be casual, you become the casualty. And if you don't go for the kill,
you get killed. That is what it is. That is what it is. And Rahul Chaudhary needs to learn this. And Rinku just smashed victory from the jaws of draw for Periyar Panthers, and they'll be celebrating today. They will be really celebrating today. I'm not sure if they would have celebrated so much when they won by big margins. The big margin wins are not so exciting. That 1 point win or that 2 point win is very big in terms of victory. फॉर श्योर नवीन, और ये देखिए इससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होगा यहाँ पर। पेरियार पैंथर्स ने जिस तरह से इस मुकाबले को जीता है, एक बार मुझे यहाँ पर याद है कि 6 पॉइंट से यहाँ पर पीछे की तरफ थी, पर उसके बाद वहाँ पर आकर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया और उसके बाद अंकित गए कि चलिए जय भगवान जाइए 1 पॉइंट ले लीजिए, परंतु ये मुकाबला जीत जाएंगे और सिर्फ 1 पॉइंट से। नवीन, आपने बिल्कुल सही कहा था कि आप चाहते हैं टाई मुकाबला आप देखना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई एक टीम जीते, और पेरियार पैंथर्स ने क्या खूब जीता है। रिंकू को पूरे क्रेडिट दिए जाएंगे। अरावली एरोज देखिए रेड में भी ज्यादा है, टैकल में भी ज्यादा है, सिर्फ अगर कहीं डिफरेंस है तो वो ऑल आउट पॉइंट्स का है और एक्स्ट्रास में है। Yeah, and I will really want to know why Rahul Chaudhary did that. I was really wanting him to go. See, it's a very simple strategy. When you go into raid, you can bring more than 1 point if you are successful. But if you are unsuccessful, it's okay. The team loses just 1 point. So somewhere Rahul Chaudhary did not want to be a hero. He did not want to be a villain. He wanted to be a support actor. That's all. And then when Rinku became a hero, Rahul Chaudhary became a comedian. That is what has happened today in the story. It should not have happened. It should not have happened. Every raider who is there getting the opportunity should go in for the kill, or else you just get killed. This is what has happened. See, it might not be a very important match, but in terms of say it's a knockout stage, or in terms of say getting those points. But what if this was a knockout game? What if this was a quarterfinal? What if this was a semi-final? Would you have done the same thing? No, right? That is what the mindset should have been. Anyways, Panchala Pride are there to take on the Maratha Marvels at 8 p.m. and Aravalli Arrows. I'm sure they will be really regretting of what Rahul Chaudhary did in that last raid. Not happening whatsoever. But the points table will remain the same, I guess, or I guess Periyar Panthers will still be remaining on top, and Aravalli Arrows will hold on to that second position. See you soon at 8 p.m. I am Navin Shauri, and Harshit Sharma was alongside with me. Thank you so much, everybody, on Fan Code. See you at 8 p.m.